Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture about the preface to Lyrical Ballads by Wordsworth, we will learn that Wordsworth and Coleridge they wanted to develop the taste of the people for the new type of poetry which they were writing, and therefore they published lyrical ballads. This is the first point we'll discuss in this lecture. The second is the objects of poetry and the manner in which this new type of poetry, that is the romantic poetry, would be written. And finally, in this lecture, we will try to understand what Wordsworth means by coloring of imagination. So these are the three topics which will be covered in this lecture. The first one is that Wordsworth and Coleridge they wanted to develop the taste of the people for this new type of poetry. We know that Wordsworth and Coleridge they were close friends and they used to meet with each other daily, and they discussed the prevailing condition of poetry of the time, and they wanted to revive genuine poetry because they did not like the poetry written by the neoclassics before them and the metaphysical poets in 17th century. So therefore they wanted to revive the genuine poetry, that is the romantic poetry, because Coleridge thought that the metaphysical poets, you studied metaphysical poets, John Donne for example, in the first semester. The metaphysical poets lived in 17th century, the neoclassics in 18th century, romantics also were in the late 18th century. So about the metaphysical poets, Coleridge used to say that the metaphysical poets, they sacrificed the heart over the head. This meant that they gave much importance to the head, to the reason and rationality, and this was the case with the elder metaphysical poets. About the younger generation of the metaphysical poets, Coleridge would say that they sacrificed both head and heart to mere stupidity. By this he meant that the younger generation of the metaphysical poets, they were stupid, they were neither following their head, that is the brain, rationality, neither following their heart, that is their emotions and passions, and whatever they were writing was just a stupidity. So that was the reason that both Coleridge and Wordsworth they revolted against such kind of poetry, whether it was metaphysical or neoclassical or pseudo-classical. They wanted to write the type of poetry which they considered genuine poetry, and therefore they published the first edition of the lyrical ballads. It was in 1798 that this edition was published, and to this edition Coleridge's contribution was quite less. To this edition he contributed just 4 poems, and to the next edition, the second edition, he contributed one. So the whole of the poems were 5 in number by Coleridge, and the rest of the poems were contributed by Wordsworth. So Coleridge contributed quite less. However, when it was published for the first time, the first edition, it received a great encouragement, although it was also criticized because it was very different and it was difficult for them to digest it. So they also criticized it, but there was a kind of encouragement which was quite unexpected for Wordsworth and Coleridge. So that's why they published the second edition too. And to this second edition, Wordsworth added a preface, and in this preface, he talks about the principles of poetry of the Romantic age. It is the type of poetry which was written by Shakespeare, and this preface is a manifesto of the Romantic poetry. It gives you
the information about the romantic poetry, its characteristics, and all that. So it was different from the 18th century poetry. Then Coleridge developed some differences with Wordsworth, and they stopped talking. And most of the preface to the second edition was something to which Coleridge would disagree. This second edition preface did not have the approval of Coleridge, and we will discuss this lack of approval of Coleridge in Biographia Literaria by Coleridge later on. ये उर्दू में सुन लें. हमारा पहला टॉपिक ये है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज जो है लोगों की टेस्ट डेवलप करना चाहता था इस नई फॉर्म ऑफ पोइट्री के लिए, और इन्होंने लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया. हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ कॉलेरिज ये दोस्त थे और ये रोज़ मिलते थे, पोइट्री की हालत को डिस्कस करते थे, और इनका ख्याल था कि हम इस पोइट्री को रिवाइव करेंगे, क्योंकि इनसे पहले की जो पोइट्री न्यू क्लासिकल पोइट्री थी वो इनके तबीयत के मुताबिक नहीं थी. और इसी तरह इन 17th सेंचुरी में जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो भी इनकी तबीयत के मुताबिक नहीं थे, बल्कि इनके मुताबिक तो कॉलेज कहा करता था कि इन्होंने दिल को छोड़कर हेड को अपना दिया है, जिसका मतलब ये है कि जज्बात को छोड़ा है और रैशनैलिटी को अपनाया है. और इनकी जो यंगर जनरेशन है उन्होंने ना जज्बात को अपनाया है और ना हेड को अपनाया है, रैशनैलिटी को, बल्कि स्टुपिडिटी को अपनाया है. लिहाजा वो चाहते थे कि इसके खिलाफ लिखें और जेन्युइन पोइट्री डेवलप करें, रोमांटिक पोइट्री डेवलप करें, और इन्होंने फर्स्ट एडिशन लिरिकल बैलेड का ये पब्लिश किया. कॉलेज ने फर्स्ट एडिशन में सिर्फ 4 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया था और सेकंड एडिशन में 1 पोएम को, तो टोटल 5 पोएम इसने कंट्रीब्यूट किए थे. बाकी की नज़में ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, तो इसकी कंट्रीब्यूशन निस्बतन बड़ी कम थी. दूसरा जो एडिशन था, पहला एडिशन था, ये 1798 में ये पब्लिश हुआ, जबकि दूसरा एडिशन 1800 में. पहले एडिशन में ज़ाहिर है चूँकि ये पोइट्री बिल्कुल डिफरेंट थी, तो कुछ लोगों ने तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वर्ड्सवर्थ और कॉलेज को ये तवक्को नहीं थी कि लोग इनकरेज भी करेंगे. बहुत सारे लोगों ने इसको इनकरेज भी किया, लिहाजा उन्होंने सेकंड एडिशन छापा, और सेकंड एडिशन में जो प्रेफेस थी यही वो प्रेफेस है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं. इसमें रोमांटिक एज के प्रिंसिपल्स के बारे में जिक्र है, और इनका ख्याल था कि हम जेन्युइन पोइट्री लिखेंगे जिस तरह शेक्सपियर के ज़माने में लिखी जाती थी, और इन्होंने 18th सेंचुरी की पोइट्री से रिवोल्ट किया. ये जो प्रेफेस है इसको मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक पोइट्री कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि इसमें रोमांटिक पोइट्री के तमाम उसूल ये मौजूद है, इसी को मैनिफेस्टो कहा जाता है. फिर इसके बाद कॉलेरिज और वर्ड्सवर्थ के बीच में मुखालफत पैदा हुई और इन्होंने बातें करना छोड़ दिया था. सेकंड एडिशन को जो प्रेफेस था इसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो कि कॉलेरिज की तबीयत के मुआफिक नहीं थी, और बायोग्राफिया लिटरेरिया को बाद में हम पढ़ेंगे तो उसमें कॉलेरिज ने इसके खिलाफ भी बात की है. तो ये हमारा पहला पॉइंट डिस्कस हुआ कि वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज they had to develop people's taste for new type of poetry, and as a result they wrote and they published lyrical ballads. The second thing we need to discuss is the objects and manner of poetry. We know about the objects of poetry of the 18th century neoclassic writers. They thought that poetry is written by grand people for great people, and it is to be read by great people in grand language. So these were the objects of imitation, and the manner of the object of poetry and the manner of writing poetry, as we have discussed earlier, was to write in heroic couplet. So that was the meter they liked the most. Then in preface to lyrical ballads, Wordsworth tells us that his objects for writing poetry are the incidents and situations taken from the life of common people.
Now you see, common people was never the subject matter or the objects of poetry of 18th century or the objects of poetry of the neoclassical writers. This was obviously a revolt against them, and Wordsworth thought and said that he was writing about the common people because these common people live close to the heart of nature. By this, he means the rustic people, the people of the villages. They live in natural atmosphere, and therefore they live close to the heart of nature. The neoclassical poetry was about the upper classes and was about the fashionable aristocrats, and these were the people who spent artificial lives. They did not live close to the heart of nature, and their habits were also artificial. So you can see the difference between the two. Then, about the language, Wordsworth said that the language of poetry is the language actually spoken by the people. We know that the neoclassical poets, they talked about the poetic diction, and by this they meant that poetry, the language of poetry, is different from the language of prose. The language of poetry is also different from the language of the civilized people, and the language of the civilized people is different from the language of uncivilized people. So it is three times removed from the language of poetry. They thought, the neoclassics, that the language of poetry is different from the language of the people of the urban society, the city people, or the civilized people. Their language is developed, but it is even then different from the language of poetry. The language of civilized people, of course, is different from the uncivilized people. And then, thirdly, they said that the language of poetry is absolutely different from the language of prose. So it is three times removed from the language of poetry. This was their idea of the manner of poetry, that the language of poetry is different. Then they said, Wordsworth and Coleridge, that they are writing about the ordinary things, but in these ordinary things, they would try to trace, to find out the primary laws of nature in them. Now, the primary laws of nature can be found only in those areas which are full of natural objects, full of greenery, full of birds and animals and natural things, while the people of the fashionable society, 18th century people, they did not trace the primary laws of nature in them because they only expressed the laws of fashion, the laws of customs of that society. These were the things which actually controlled the society. So once again, you find that difference. Wordsworth also used to say that the rustic people, the village people, they have a kind of emotional excitement, and this emotional excitement does not destroy the beauty of things, um, but actually they beautify the things a little more. The idea of the neoclassics was different. They thought that only the fashionable society is the best of all. ये उर्दू में सुन लें ऑब्जेक्ट्स एंड मैनर ऑफ पोइट्री के बारे में। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो उसने लिखा कि हम जो कॉमन लोग हैं इनकी इंसिडेंट्स को पोर्ट्रे करेंगे, इनकी सिचुएशन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि ये जो विलेज के लोग हैं, रस्टिक्स जिनको कहते हैं, ये हार्ट ऑफ नेचर के करीब रहते हैं, कुदरती चीज़ों के करीब रहते हैं,
जबकि जो अपर क्लासेस हैं, फैशनेबल एरिस्टोक्रेट्स हैं, जिनके बारे में न्यू क्लासिक्स ने लिखा है, उन्होंने आर्टिफिशियल लाइव्स गुजारी हैं, आर्टिफिशियलिटी को पसंद किया है, तो ये इनसे इसलिए डिफरेंट है और ये जेन्युइन पोइट्री है। फिर मैनर ऑफ पोइट्री के बारे में उन्होंने लिखा कि जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है ये आम लोगों की लैंग्वेज होगी और कोई पोएटिक डिक्शन वाला आइडिया इसमें नहीं था। लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि हमें पता है कि न्यू क्लासिक्स ने पोएटिक डिक्शन का उसूल निकाला कि वो जो है ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे जो ग्रैंड लैंग्वेज होगी, ऑर्डिनरी लोगों की लैंग्वेज नहीं होगी। ग्रैंड लोग इसको पढ़ेंगे, ग्रैंड लोग इसको लिखेंगे और ग्रैंड लोगों के बारे में लिखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पोएटिक लैंग्वेज है ये अर्बन सोसाइटी के लोगों के, शहरी लोगों की ज़बान से डिफरेंट है, जिसको सिविलाइज्ड कहते हैं। ये अनसिविलाइज्ड से भी डिफरेंट है और ये प्रोज की लैंग्वेज से भी डिफरेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हैं, रस्टिक लोग हैं, और इनके जो सब्जेक्ट मैटर है ये लगते तो ऑर्डिनरी हैं, लेकिन हम इसमें ट्रेस करेंगे, मालूम करेंगे और ढूंढेंगे प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर। प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर से मुराद है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल आइडियाज और फैशन से दूर, कस्टम से दूर, जेन्युइन टाइप ऑफ लोग जिसमें आर्टिफिशियलिटी ना हो, ये प्राइमरी लॉज ऑफ नेचर कहलाएंगे। 18th सेंचुरी के लोग ये फैशन और कस्टम पे बिलीव करते थे और यही फैशन और कस्टम इनको कंट्रोल करते थे, लिहाजा वर्ड्सवर्थ ने इनके खिलाफ लिखा और ऐसी पोइट्री के खिलाफ लिखा और इस पोइट्री को रिजेक्ट किया। वर्ड्सवर्थ ने यह भी कहा कि ये अपनी पोइट्री में इमोशनल एक्साइटमेंट ऑफ दीज रस्टिक्स, ये जो विलेजर्स हैं इनकी इमोशनल एक्साइटमेंट, जज्बाती एक्साइटमेंट के बारे में लिखेंगे। और ये जज्बाती एक्साइटमेंट जो है ये ब्यूटी को डिस्ट्रॉय नहीं करती, क्योंकि न्यू क्लासिक का ख्याल था कि इमोशनलिटी ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। ये पहला पॉइंट था कि उन्होंने टेस्ट डेवलप करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट था कि ऑब्जेक्ट और मैनर ऑफ पोइट्री क्या होंगे। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट खत्म होता है। Then comes our third point, the coloring of imagination and how it works. So this is our third point. Wordsworth says that he selected the lives of the rustics, and his poetry is about the rustic people. The life and things of the rustic people are discussed in his poetry, and he says that he would throw the coloring of imagination on all these rustic things. It is due to this coloring of imagination that these ordinary things, these rusting things, will no more remain ordinary. They will become special and they will become universalized. This coloring of imagination will give it a universal significance. Why is this so? It is so because he thought that there is a curtain of prejudice, a curtain of customs and worldly occupation and habits over our faces. It's a kind of veil which we are wearing, the veil of prejudice, the veil of customs, the veil of habits and occupations. And we are behind this veil, so our actual self is not expressed. And due to this veil, we do not appear interesting. In order to make it interesting, this veil of prejudice, customs and occupation, it is to be removed. And this can be done only by imagination. The purpose of imagination is that it tears away this veil of customs
this veil of artificiality, this veil of prejudice. It is removed by imagination. And as a result, these small things, they give us great thoughts. Because of removing that veil, the small things um, looks to us different, and it gives us deep thoughts. And that's why Wordsworth used to say that even the meanest flower, the smallest flower, can give him deep thoughts. So this is what he believed in. According to him, he believed that there is a God smiling in the flower, but you cannot find him unless you remove that veil of prejudice, that veil of artificiality. In the sound of cuckoo, you hear the sound of God. But once again, you have to use imagination to remove that veil, and as a result, when that veil is removed, you'll see all these things, you'll see miracles happening around you. So imagination does this thing, and it is therefore important. When we remove this veil with the help of imagination, we see wonders and miracles happening around us. The neoclassics were the enemies of imagination because they thought that imagination takes us away from reality of things. While Wordsworth's idea is that the imagination takes us closer to the reality of life. तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है, कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन. वर्ड्सवर्थ ने कहा कि हम रस्टिक लोगों के बारे में लिखेंगे, लेकिन ये रस्टिक लोगों के बारे में जो कि ऑर्डिनरी लोग हैं, हम इस पे डालेंगे कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन. हम इसको इमेजिनेशन का रंग देंगे, और जब हम इसको इमेजिनेशन का रंग देंगे तो ये आम चीज़ें भी ख़ास हो जाएंगी, और इसको यूनिवर्सल लाइट में हम देख सकेंगे. और उसका ख्याल ये था कि जो आम चीज़ें हैं उस पे पर्दा पड़ा हुआ है बुग़्ज़ का, रिवाजों का, दुनिया की चीज़ों का, आदात का, और इस पर्दे को हटाने का एक ही तरीका है, और वो है इमेजिनेशन का इस्तेमाल. जब आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ये अनइंटरेस्टेड चीज़ें भी इंटरेस्टिंग नज़र आएंगी, क्योंकि इमेजिनेशन ये पर्दा बुग़्ज़ का और आदतों का ये हटा देगा. छोटी चीज़ें भी गहरी थॉट्स हमें देंगी, जैसे कि वर्ड्सवर्थ कहा करता था कि छोटे से छोटा फूल भी उसको डीप थॉट्स देता है. और फ्लावर में आपको गॉड स्माइलिंग नज़र आएगा, कुकू की आवाज़ में गॉड की आवाज़ आपको सुनाई देगी, और ये सारी चीज़ें रिवील तब होंगी जब आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे. तो आपके गिर्द मिरेकल्स और वंडर्स ये होंगे. न्यू क्लासिकल का आइडिया बिल्कुल इसके बरक्स था. उनका ख्याल था इमेजिनेशन ये आपको दूर ले जाता है रियलिटी ऑफ थिंग्स से, जबकि वर्ड्सवर्थ का इसका उलट ख्याल है, इमेजिनेशन आपको रियलिटी के करीब ले जाता है. तो ये 3 पॉइंट्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस हुए. अगर आप देखें तो हमारा ये पहला पॉइंट था कि उन्होंने टेस्ट डेवलप करना चाहा नई टाइप ऑफ पोइट्री का, लिहाजा लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया. 1798 में पहला एडिशन और 1800 में दूसरा एडिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन में आम लोगों की, रस्टिक लोगों की बातें, सिचुएशन और वाक़यात, और मैनर ऑफ पोइट्री में ऐसी लैंग्वेज जो सिविलाइज लोगों की लैंग्वेज से भी डिफरेंट हो, अनसिविलाइज लोगों की लैंग्वेज से भी डिफरेंट हो, और प्रोज की लैंग्वेज से भी डिफरेंट हो. कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन पे हमने बात की, जिसका मतलब वो ये लेता है कि तस्वर के थ्रू आप जो पर्दा है हमारी आंखों पर बुग़्ज़ का, रिवाजों का, ये हट जाता है. और ये पर्दा जब हटता है तो हमें मामूली चीज़ों में भी गहरी सोचें और गहरी चीज़ें नज़र आती हैं, और हम किसी फूल के पीछे गाठ को देख सकते हैं, कुकी की आवाज़ और नगमे के पीछे गाठ की आवाज़ सुन सकते हैं. ये आइडिया न्यू क्लासिक्स का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल था इमेजिनेशन आपको रियलिटी से दूर ले जाता है. वर्ड्सवर्थ इसका अपोजिट कहता है कि इमेजिनेशन आपको रियलिटी के करीब ले जाता है. सो दैट्स इट. थैंक यू एंड गुड लक.